11. Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we'll discuss about the computer awareness. The questions are on your screen. The first question for you. Dash is the maximum amount of data that can be stored on a storage medium. The options are optical storage, magnetic storage, solid state storage, storage capacity, and none of these. Anyone can give the response? Which option is the right answer? Option A, option B, option C, option D, and option E. Dash is the maximum amount of data that can be stored on a storage medium. एमान भितर कोटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करि पारे जोटा कि स्टोरेज मीडियम हिसाब रे भी निया जाय. The right answer is option D, that is storage capacity. Storage capacity refers to how much this space one or more storage device provide. Storage capacity measures how much data a computer system may contain. For example, with a computer with 100 GB hard disk has a storage capacity of 100 GB. और माने होची जे स्टोरेज कैपेसिटी होची एई बडी बडी जिंस जो थरे कि हमें केते अमाउंट रो डाटा स्टोर करिवा गोटे स्टोरेज डिवाइस रे बा कंप्यूटर सिस्टम रे सेटा हमें मेजर करू. जेंति कि गोटे स्टोरेज डिवाइस रो हमें कैपेसिटी कहूची 100 GB, then it can store 100 GB amount of data. Next question for you. A dash is a software program used to view web pages. A dash is a software program used to view web pages. एमार को भितर कोटा गोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जोटा कि हमर वेब पेज कोडा को देखिबा पई यूज करा जाय. ऑप्शंस आर होस्ट, साइट, लिंक, ब्राउजर, नॉन ऑफ दीज. Anyone can give the right answer? Option A, host. Option B, site. Option C, link. Option D, browser. Option E, none of these. एमान को भितर कोटा गोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जहा कि वेब पेज गुडा को देखिबा पई यूज करा जाय. The right answer is option D, browser. Web browser is a special type of application used to enable the computers to locate and access web pages. ताले हमें जो वेब पेज गुडा को कहूचे वेब सर्वर रे अछि एंड से वेब पेज गुडा को हमें असेसिंग करिबा को चाहूचे जो स्पेशल सॉफ्टवेयर को हमें यूज करू सेटा को ही वेब ब्राउजर बोली कहिताउ. आउ ए जो वेब ब्राउजर द्वारा वेब पेज गुडा को असेसिंग करा जायते. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ए कंप्यूटर सिस्टम includes option A, software, option B, hardware, option C, peripheral devices, option D, all of the above, option E, none of these. A computer system includes software, hardware, peripheral devices, all of the above, none of these. Anyone can give the right answer? Option D is the right answer. All of the above. गोटे कंप्यूटर सिस्टम रे थाए कोन? गोटे कंप्यूटर सिस्टम रे ए समस्त जिंस थाए. सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलरली कंप्यूटर को ऑपरेशन करा जाए एवं कंप्यूटर रे विभिन्न प्रकार काम गुडा को करा जाए सेगुडा को हमें सॉफ्टवेयर बोली कहिथाउ. कंप्यूटर रो जोडा को कहिथाउ मेकानिज्म्स ता सेटा को कह जाता है हार्डवेयर. एंड कंप्यूटर जो
कीबोर्ड कहूच माउस कहूच प्रिंटर कहूच such are known as the peripheral devices. So गोटे कंप्यूटर सिस्टम रे ए समस्त जिंस गुड़ाक थाए. Next question for you. The term dash refers to any computer component that is required to perform work. The term dash refers to any computer component that is required to perform work. Option A, kernel. Option B, bootstrap. Option C, resource. Option D, source code. And option E, none of these. एमानक भितर को टर्म टा कंप्यूटर रो कंपोनेंट्स गुडा को बुझाई थाए जहा कि किछ गोटे टास्क करिवा पई हमरो कंप्यूटर रे हेल्पफुल हुए. व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिसोर्स. कंप्यूटर रो जो रिसोर्स बोली कहू बा जो जिंस गुडा को हमें कहू सेगुडा को प्रतिटी जिंस गोटे गोटे कंप्यूटर रिसोर्स जहा कि कंप्यूटर रे किछ गोटे टास्क करिवा पे हेल्पफुल करिथाय. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. The term dash refers to data storage systems that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data. एमानक भितरु को टर्म टा रेफर करूची डाटा स्टोरेज सिस्टम को जहा कि कंप्यूटर रे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम रे डाटा को स्टोर करि थाए एबो रिट्राइव भी करा जाय थाए जहा ध्यान इंफॉर्मेशन डाटा को स्टोर करा जाय थाए एबो परवर्ती मुहूर्त रे आवश्यक अनुसार सेथरो डाटा को रिट्राइव करा जाय थाए माने बाहर करा जाय थाए. ऑप्शन ए, इनपुट टेक्नोलॉजी. ऑप्शन बी, रिट्राइवल टेक्नोलॉजी. ऑप्शन सी, आउटपुट टेक्नोलॉजी. ऑप्शन डी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी. एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज. व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? Anyone can give the response? The right answer is option D, storage technology. Through storage technology, we can store the information by the electronic media and whatever necessary, then after extract it. जहाँ किसी हम information दरकार हमें store करूँ एवं retrieve भी करूँ. Next question for you. You use a dash such as a keyboard or a mouse to input information. You use a dash such as a keyboard or mouse to input information. Option A, processing device. Option B, storage device. Option C, input device. Option D, output device. And option E, none of these. Which option is the right answer? You use a dash such as a keyboard or mouse to input information. एगुड़ा को कौन बोली कंप्यूटर रे कुआ जाय थाए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस. तो एगुड़ा को कंप्यूटर रो गोटे गोटे इनपुट डिवाइस बोली कुआ जाय थाए बा इनपुट पेरिफेरल्स बोली कुआ जाय थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. डैश अलाउज वॉइस कन्वर्सेशंस टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट. डैश अलाउज वॉइस कन्वर्सेशंस टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट. ऑप्शंस आर ए, instant messaging. Option B, internet telephoning. Option C, email. Option D, e-commerce. Option E, none of these. Anyone can give the right answer? If anyone know the right answer, then simple, give your response by chatting. एमानक भितर कोटा वॉइस कन्वर्सेशन पाई यूज करा जाए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ईमेल. ईमेल द्वारा हमें भी टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज, वीडियो मैसेज और एनी अदर डॉक्यूमेंट जहां भी हमें चाहिए अटैचमेंट करि परिबा एंड दैट इज द मीडिया ऑफ सुइटेबल ऑफ कन्वर्सेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not true about computer files? एमानक भितरु कोटा ठीक नुह कंप्यूटर रो फाइल पाई? ऑप्शन ए, एवरी फाइल हैज ए फाइल नेम. ऑप्शन बी, दे आर कलेक्शंस ऑफ डाटा सेव्ड टू ए स्टोरेज मीडियम. नेक्स्ट ऑप्शन,
Next option, the what your a file extension is established by the user to indicate the file's content. All files contains data, and last option is none of these. गोटे फाइल पाई एमानक भितर दिया जाइथिबा को स्टेटमेंट ता एक्जेक्टली ट्रू. Anyone can give the response? The right answer is option C. A file extension is established by the user to indicate the file's contents. ताले गोटे फाइल एक्सटेंशन को प्रकार सेटा फाइल जदि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे करूचे सिंपली तार फाइल एक्सटेंशन बा सेकंड नेम देइथाउ .docx. जदि एक्सेल रे फाइल तयारी करिथाउ तार फाइल एक्सटेंशन बा सेकंड नेम दिया जाइथे .xlsx. जदि पावर पॉइंट करा जाइथे ताले तार फाइल एक्सटेंशन .pptx. जदि जहां भी एमती अन्य एप्लीकेशन गुडा रे करा जाय एई भली किछि फाइल रो एक्सटेंशन बा सेकंड नेम यूज करा जाय ताले एग्जैक्टली से कहूची एका ना रे मे बी फाइल थाई पारे बट फाइल एक्सटेंशन ही फाइल रो कैटेगोरीटा बा फाइलटा को प्रकार फाइल को इंडिकेट करि थाए. सो ऑप्शन सी, ए फाइल एक्सटेंशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूजर टू इंडिकेट द फाइल्स कंटेंट्स. फाइलटा कोन अछि से फाइलटा को प्रकार फाइल सेटा फाइल एक्सटेंशन ही स्पेसिफाई थाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. A dash is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds or thousands of users. A dash is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds or thousands of users. Option A, mainframe computer. Option B, handheld computer. Option C, personal computer. Option D, tablet computer. And option E, none of these. एमानक भितरु को कंप्यूटर टा बहुत बड़ आ बहुत व्ययबहुल भी बहुत खर्च करबा को पड़े ता पई एबो जोथिरे साइमल्टेनियसली माने एका थरे के अनेक गुडाए यूजर बसी काम भी करंती एबो अनेक गुडाए डाटा एका समय भी प्रोसेसिंग हे थाए. एनीवन कैन गिव द राइट आंसर. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई. द राइट आंसर इज mainframe computer. Mainframe, or that is also known as large computer. So this computer help to process large amount of data simultaneously, and it also allows many users to work with at the same time. Next question for you. The dash is responsible for performing calculations and contains decision making mechanisms. The dash is responsible for performing calculations and contains decision making mechanisms. एमानक भितर कोटा किछि कैलकुलेशन करिबा एवं किछि डिसीजन नबार काम करि थाए. ऑप्शन ए, मेमोरी यूनिट. ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ऑप्शन सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ऑप्शन डी, आउटपुट यूनिट. एंड ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दिस. Anyone can give the right answer? If anyone know the right answer, simply give your response by chat. Which option is the right answer? The right answer is option C, that is arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit is a device that can help us for the calculations or decision making process. ए arithmetic logic unit रे आमे किछि कैलकुलेशन करिथौ जहा भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बा कंप्यूटर रे जहा भी किछि डिसीजन निया जायथाय जेमति कि कंपैरिजन करा जाय either less than, greater than, equal to, everything has decided by the arithmetic logic unit or ALU. Next question for you. Which of the following can only have sequential access? एमानक
भितरु कोटा धारावाहिक भाव में सीरियली भाव डाटार आसेसिंग करिथाय ऑप्शन ए टेप ऑप्शन बी डिस्क ऑप्शन सी सीडी रोम ऑप्शन डी डीवीडी रोम एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस एमानक भितरु को जिंसटा इंफॉर्मेशन रो सीरियली आसेसिंग करिथाय बा कोथिरे इंफॉर्मेशन टा सीरियली भाबे आसेसिंग हेइथाय रैंडमली आसेसिंग हेइथाय द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज मैग्नेटिक टेप और टेप यूनिट जो थ्री के रील भली थाय आमे देखिथिबा पुराना समय रे रील भली जिंस यूज करा जाउथिला सेतरे डाटा स्टोरेज हेइथिले डाटा को सीरियली भाबे ताकू रील को गुडांती काहेकि ना से स्टेप आसले ही से डाटा आसेसिंग हेइ परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू sending an email is similar to email sending similar kaha sohito option A drawing a picture option B writing a letter option C talking on the phone option D sending a package option E none of these गोटे ईमेल को सेंडिंग करिबा प्रोसेस एमानक भितरु काहा सहित सिमिलर बा गोटे ईमेल पठेबार प्रोसेस एमानक भितरु काहा सहित समान एनीवन कैन गिव द रिस्पांस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी राइटिंग ए लेटर ईमेल जहा लेटर आमे लिखुचे जहा ईमेल टा होची सेही बडी किछि जिंस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसीडर्ड items such as names and addresses are considered option A input option B information option C records option D data and option E none of these जेमति कि आमे किछि ना एड्रेस एगुडा को जेतबे आमे कलेक्शन करिथौ एगुडा को एग्जैक्टली आमे कोन बोली कहू कंप्यूटर भाषा रे एनीवन कैन गिव द रिस्पांस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डेटा बोली कह जाए डेटा माने रॉ फैक्ट माने मु जानिनी तारो फिनिश्ड रिजल्ट केमिति हबो मु ना गुडा कलेक्शन करि आनछि एड्रेस गुडा कलेक्शन करि आनछि सेमान को एज गुडा को बुझी आसीछि बट ताको को पाई केमिति पाई यूज करा जिवो सेटा मु जानि नाही तो ई जो रॉ फैक्ट गुडा को हमें कलेक्शन करू सेगुडा को एक्चुअली डेटा बोली कह जाए एटी छोटो गोटे एग्जांपल बेसिक जिंस जोटा अनेक लोकंगर भी डाउट भितर थाए what is the difference between the data and information what is the difference between the input and output समस्त कहि दियंती कंप्यूटर को इनपुट दे देबा आउटपुट बाहरी जीवो ताले what is that input and what is that output सेटा प्रथमे हमें क्लियर होबा दरकार सिंपली जिंस हमें जतल गोटे खरा होउची आणि जूस पीबा पई जाउची तो जूस पीबा पई जतल जाउचे जूस दुकानी हम पई जूस बने के रखी नाही हमको ताको ऑर्डर दबा पड़ुची जे जूस बने की दे तो से जूस बनेबा पई से किछि पानी नउछि किछि लूण नउछि किछि चीनी नउछि किछि एप्पल बा सेवर टुकड़ा नउछि किछि कमला अंश नउछि किछि ग्रेप्स बा अंगूर नउछि किछि सपुरी भी काटिकी ता धीरे पकोउछि एई 5-7टा जिंस को जो से फास्ट कलेक्टिवली नेला सेगुडा को गोटे गोटे डाटा बा सेगुडा को गोटे गोटे रॉ फैक्ट बोली कहंती आमे जानि न थाउ एंड एगुडा को ताको इनपुट करबा को ही पड़िबो कारण ताको जदी जूस बनेबार अछि ए 7टा जिंस को इनपुट करबा को ही पड़िबो तो सेई जो रॉ फैक्ट गुडा को जहार फिनिश रिजल्ट कोन आसीबो हमको जाना नाही सेई बडी जिंस को कंप्यूटर पे डाटा बोली खुआ जाय जेतेबेले से ग्राइंडर रे एगुडा को सब एकाडी मिसे कि किछ समय पे घांटुची दैट इज नोन एज द प्रोसेसिंग तो कंप्यूटर भी से ही करे कंप्यूटर प्रोसेसर रे प्रोसेसिंग करे एंड फाइनली जेतेबेले हमको ग्लास रे से सर्व करूची स्ट्रॉटा पकई देई हमें जो पी दोचे भारी बढ़िया लागुची टेस्टी लागुची दैट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन आउटपुट तो एग्जैक्टली कंप्यूटर रे रॉ फैक्ट देला पर हमें जानि न थाउ कोन रिजल्ट आसीबो बट कंप्यूटर प्रोसेसिंग कला पर जो जिंसडा हमको प्रोवाइडिंग करथे यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट इज नोन एज द आउटपुट तो एग्जैक्टली मो क्वेश्चन सेया ही थिला जेतेबेले मो एही भली जिंस को किछि कलेक्शन करूची सेगुडा को कोन बोली खुआ जाय जहार फिनिश रिजल्ट मो पाई नाही कोन केमथि हबो जानि नाही सिंपली कंप्यूटर ताको डाटा बोली खुआ जाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वन हु डिजाइन्स राइट्स टेस्ट्स and maintains computer program is called as जे कोन करे डिजाइनिंग करी थाए राइट करी थाए लिखी थाए
टेस्ट भी करि थाए जे ठीक अछि ना नहीं, मेंटेन भी करि थाए कंप्यूटर प्रोग्राम गुडा को, ताकू कोन बोली कहंती? ऑप्शन ए प्रोग्रामर, ऑप्शन बी यूजर, ऑप्शन डी डिजाइनर, ऑप्शन डी operator, and last option is none of these. Anyone can give the right answer? The right answer is option A. ताकू गोटे प्रोग्रामर बोली कहंती, जे प्रोग्रामर यूज करे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे कोड्स लिखे, प्रोग्रामिंग कोड्स लिखला पर सॉफ्टवेयर उडा डेवलपमेंट हेता है, तो जे एग्जैक्टली प्रोग्रामर इंप्लीमेंट करे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे, ताकू गोटे प्रोग्रामर बोली कहा जाए. सिंपली थिंक. Next question for you. Which of the following is not true concerning user IDs and passwords? Which of the following is not true concerning user IDs and passwords? User ID एवं password क्षेत्र रे इमानको भितरु कोउटा ता सहित सत्य बोली संश्लिष्ट नुह बा सेटा सत्य बोली नुह बोली प्रमाणित हुए. Option A, if your computer asks for a user ID and password, you can create your own. Option B, when you enter your user ID and password, the computer knows it is you. Option C, sometimes you are assigned a user ID and password for security reasons. Option D, you should share your user ID and password with at least one other person. Option E, none of these. Anyone can give the right answer? इमानको भितरु सॉफ्टवेयर जो आईडी और पासवर्ड रिलेटेड को जिनसटा संश्लिष्ट नुह बा तार कंसर्निंग नुह. Anyone can give the response? The right answer is option D. You should share your user ID and password with at least one other person. ताले इमानको भितरु एटा एई स्टेटमेंट ही सत नुह. मु तो पासवर्ड देबी ना, मो कहा सहित शेयर करिबी भी काहे? तेणु करी जदि गोटे लोक सहित भी शेयरिंग करिया पई कुआउची, ता माने ए स्टेटमेंट ता पई ट्रू नुह. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. This component is required to process data. This component is required process data into information and consist of integrated circuits. एमानक भितरु को कंपोनेंट ता हमरो इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करिबा पई यूज करा जाय एवं एथरे इंटीग्रेटेड सर्किट मध्य थाए. ताले ऑप्शन ए RAM, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी ROM, and option E none of these. Anyone can give the response? The right answer is option C, that is CPU. It is the brain of the computer, and जो CPU सहित हमर IC बा integrated circuit मध्य इन्वॉल्व थाए. Next question for you. Computers connected to a LAN can. Computers connected to a LAN. LAN means local area network. आमे पूर्व भी बहुत थर मु डिस्कशन करिछि. कंप्यूटर रो जो नेटवर्किंग करा जाय माने अनेक गुडे कंप्यूटर को परस्पर सहित कनेक्टेड करा जाय. से कंप्यूटर नेटवर्क को बेसिकली दुई भाग रे पार्टीशन कराइछि. गोटे पर्पस अनुसार गोटे साइज अनुसार भी कंप्यूटर नेटवर्क बहुत प्रकार अछि. जेमति कहूचे LAN, CAN, LAN, WAN, MAN, इंटरनेट, एंड पर्पस अनुसार जोडा कहूचे आमे EPN, VPN, SAN. मोर कहिबार कथा हला कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए LAN CAN. कंप्यूटर गोटे LAN सहित जो कनेक्टेड हुए कोन करि पारे? गो ऑनलाइन. ऑप्शन बी रन फास्टर. ऑप्शन सी शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट. ऑप्शन डी ईमेल. ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. Anyone can give the answer? Which is the right answer among them? The right answer is option C, share information and or share peripheral equipment. जदि कंप्यूटर आमे नेटवर्किंग करूचे माने कोन किछि
हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग करिबा बा किछि सॉफ्टवेयर रिसोर्सिंग रो शेयर करिबा अदल बदल करिबा सेति पई तो कंप्यूटर नेटवर्किंग करा जाय तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट ताले लैन को बेसिकली आमे गोटे ऑफिस भीतर यूज करि परिबा गोटे बिल्डिंग भीतर यूज करि परिबा गोटे स्कूल भीतर यूज करि परिबा गोटे छोटो प्रेमिसेस गोटे छोटो जगह भीतर कंप्यूटर रो इंटरकनेक्टेड करा जिवो दैट इज द लैन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर व्हिच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स ऑप्शन ए लैपटॉप ऑप्शन बी नोटबुक ऑप्शन डी डेस्कटॉप ऑप्शन सी वर्कस्टेशन ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस एमानक भितर सबुठारु छोट कंप्यूटर कोटा एटा माने बहुत इंटरेस्टिंग जिंस एमानक भितर सबुठारु छोट कंप्यूटर कोटा बहुत प्रकार तो कंप्यूटर आमे जानि छे कंप्यूटर को साइज अनुसार पर्पज अनुसार कंप्यूटर रो वर्क अनुसार ताको क्लासिफाई करा जाई छी तथापि एठी किछि कंप्यूटर मानक ना दिया जाई छी तो एमानक भितर सबुठारु छोट कंप्यूटर कोटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नोटबुक नोटबुक टा सबुठारु छोट मोबाइल फोन भली ताको हाथ धरिके बुलंती तो नोटबुक टा होची सबुठारु छोट कंप्यूटर बा इटा गोटे पीसी बोली भी कहंती पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप भी गोटे पीसी लैपटॉप भी गोटे पीसी जस्ट लाइक दैट नोटबुक भी होची गोटे पीसी बा पर्सनल कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द मोडेम कनेक्टेड टू व्हाट इज द मोडेम कनेक्टेड टू ऑप्शन ए मदरबोर्ड ऑप्शन बी प्रोसेसर ऑप्शन सी प्रिंटर ऑप्शन डी फोन लाइन ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस anyone can give the response a modem ro exactly कामटा कोन ही थाए बा ए मोडेम ता बेसिकली को जगह रे कनेक्शन खपा दरकार पड़े anyone can give the response गोटे मोडेम बेसिकली हमर फोन लाइन रे ही कनेक्ट हुए काहे कि ना मोडेम एम ओ मॉड्यूलेटर डीएम डीमॉड्यूलेटर the modulation and demodulation process carried by a special device called modem modulation एवं demodulation काम जो special device रे करा जाय ताको modem बोली कहंती and modem रो काम होला टेलीफोन लाइन भीतर बसिबा जहा कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म को कन्वर्ट करी थाए and डिजिटल फॉर्म को एनालॉग को कन्वर्ट करी थाए तो modulation and demodulation process carried by a special device called modem so right answer is option D phone line next question for you secondary storage ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋ statement ଟା true ଅଛି doesn't use magnetic media doesn't require constant power consists of four main types of devices doesn't store information for lateral retrieval option E none of these which option is the right answer among them emanok bhituru kota right answer the option B is the right answer doesn't require constant power आउ सबु किछि इटा होची माने सेकेंडरी स्टोरेज रे थाए doesn't require constant power हमें जानि छे प्राइमरी मेमोरी जेमति कि RAM सेतरे इंफॉर्मेशन ता परमानेंटली रही पारे नहीं as long as the power supply is on to the computer data inside primary memory जे पर्यंत कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई ऑन थाए से पर्यंत प्राइमरी मेमोरी इंफॉर्मेशन ता थाए but at the time of power failure or discontinued or computer switch off data inside primary memory has lost तेनु करी पावर सप्लाई जेतले डिस्कंटिन्यू ही जाए हमरो RAM रे थिबा इंफॉर्मेशन को सब मध्य उडी जाए कटि जाए तो एथिरे होची कांस्टेंट पावर दरकार नाही सेकेंडरी स्टोरेज पय सेतरे गोटे थर इंफॉर्मेशन स्टोर हे गला माने इंफॉर्मेशन रही गला सो इट कैन स्टोर मास इंफॉर्मेशन परमानेंटली ये बहुत बड़े इंफॉर्मेशन को परमानेंटली बा स्थायी भाव रे रखि पारे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कंप्यूटर दैट is whatever is typed submitted or transmitted to a computer system computer dash is whatever is typed submitted or transmitted to a computer system option A output option B input option C data
ऑप्शन डी सर्किटरी, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिच। कंप्यूटर जहाँ किसी टाइप करिथाय सबमिट करिथाय बा ट्रांसमिट करिथाय कंप्यूटर सिस्टम रे से एक्टिविटीटा कौन बोली कहती? एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स? very interesting thing. That activity known as simply option B input बोली कहती। simply कंप्यूटर रे इनपुट कौन किसी हमें टाइपिंग करूचे सेटा भी गोटे प्रकार इनपुट। कंप्यूटर रे हमें किसी सबमिट करूचे जेमति कि फॉर्म रे सब फिलअप करला परे ताको गोटे सबमिट करा जाए सेटा भी गोटे कहती इनपुट। कंप्यूटर किसी ट्रांसमिशन करूची एथरु डाटा सेथरु को ट्रांसफर करूची बा पेन ड्राइव रो हमें किसी डाटा सेथरु को छाडुचे तो एई भली जो जिंसडा करूचे एगुडा को गोटे गोटे कंप्यूटर रे इनपुट एक्टिविटी बोली कहती। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। an error is also known as, it is very interesting thing actually जो भूल बोली हमें कहू रॉन्ग बोली कहू कंप्यूटर भाषा रे सेटा को कोन बोली कहंती? ऑप्शन ए डीबग, ऑप्शन बी बग, ऑप्शन सी कर्सर, ऑप्शन डी आइकन एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिच। कंप्यूटर जो एरर हुए कंप्यूटर जो मिस्टेक हुए से मिस्टेक टाकू कंप्यूटर भाषा रे कोन बोली कहंती? एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ताकू एक्चुअली बग बोली कहंती। सेति पे कहंती तो प्रोग्राम रे डीबगिंग करिबा। डीबग माने डिटेक्ट द एरर, एरर जदी किछ अछि त खोजिबा तो कंप्यूटर भाषा रे एरर को बग बोली ही कहंती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज आउटपुट? ए आउटपुट माने कोन? What the user gives to the processor. Option B what the processor takes from the user. Option C what the processor gets from the user. Option D what the processor gives to the user. And none of these. ए आउटपुट रा माने कोन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन पी ई? ए आउटपुट रा माने कोन? ये आउटपुट रा माने होची ऑप्शन डी व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर। प्रोसेसर यूजर को जहां दिए दैट इज नोन एज द आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ए मेनू कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ, ए मेनू कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ डेटा, कमांड्स, ऑब्जेक्ट्स, रिपोर्ट्स, नॉन ऑफ दिस। एनीवन कैन गिव द आंसर? ए मेनू कौन थाए एथरे? तमे जो मेनू जो कहउछ जेंति कि तमे नोटपैड फिटे दूछ गोटे फाइल होची मेनू, से मेनू भितरे कोन सब देखिछ छोडा सब गोटे गोटे कोन बोली कहंती? एनीवन कैन गिव द राइट आंसर? द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। से गुडा को गोटे गोटे कमांड्स बोली कहंती। तो मेनू भितरे जो गुडा का थाए ताकू गोटे गोटे सब मेनू बा कमांड्स बोली कहंती। जेंति फाइल मेनू को क्लिक करला को न्यू थिबो, ओपन थिबो, सेव थिबो, सेव एज थिबो, प्रिंट थिबो, क्लोज थिबो, एगुडा को गोटे गोटे कमांड्स बोली कहंती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। The next question for you that is which function or which of the following consisting of only input devices? a group भितरे कोटा खाली इनपुट डिवाइस गुडा को कैरी आउट करिछि। ऑप्शन ए माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। ऑप्शन बी माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। ऑप्शन सी माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। ऑप्शन डी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिच। इमान को भितरु कोटा खाली इनपुट डिवाइस को कैरी आउट करिछि। सब बेले देखिबो एग्जाम मान करे बहुत सिंपल जिंस गुडा को पड़े
बट आमे रॉन्गली गोटे रॉन्ग जिंस को ही मारी दो बाय माने एक्साइटेड ही जे हम एटा गोटे इजीली जिंस या भितर एटा किंतु मारी देला परे हुए तो सेटा हमें पर पुणी भाबु जे एटा भूल जोटा कि माइनस मार्किंग हिते तो भलो भाबे टिके क्वेश्चन को देखि नबा दरकार सब एका भलिया लागुची कारण माउस कीबोर्ड ऑलमोस्ट सबुतरे समान भलिया अछि कंफ्यूज करे दो लास्ट जिंसटा सेटा जदि हमें मार्क न करिथिबा क्वेश्चनटा भूल हे जिवो एनीवन कैन गिव द रिस्पांस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी माउस कीबोर्ड एंड स्कैनर देखो माउस कीबोर्ड प्रिंटर माउस ता कीबोर्ड ता होचे गोटे इनपुट डिवाइस बट ता देरे प्रिंटर ता होचे एक्सेप्शनल आसला माने गोटे आउटपुट डिवाइस माउस कीबोर्ड ता इनपुट डिवाइस मॉनिटर भी गोटे आउटपुट डिवाइस माउस कीबोर्ड प्लॉटर से भी गोटे आउटपुट डिवाइस किंतु माउस भी होचे गोटे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड भी होचे गोटे इनपुट डिवाइस स्कैनर भी होचे गोटे इनपुट डिवाइस सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर okay next question for you a device that connects to a network without the use of cables is said to be गोटे डिवाइस जहा कि नेटवर्क सहित कनेक्शन हुए किंतु कौनसी केबल बिना बा कौनसी तार बिना ताकू आमे कंप्यूटर रो कोन बोली कहिताउ बा से टर्म ताकू कोन बोली कहिताउ ए सेंट्रलाइज्ड ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन सी ओपन सोर्स ऑप्शन डी wireless option E none of these which option is the right answer a device that connects to a network without the use of cables cable बिना जो डिवाइस टा कनेक्शन हुए नेटवर्क रे ताकू से जो जिंसटा टर्म टा कोन बोली कहआ जाय anyone can give the right response anyone can give the right answer the right answer is option D सेटा को एक्चुअली वायरलेस बोली कहंती कारण वायर नाही माने केबल नाही माने वायरलेस तार लागि नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए वेबसाइट एड्रेस इज ए यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब ए वेबसाइट एड्रेस इज ए यूनिक नेम गोटे वेबसाइट रो एड्रेस नेम ता कि यूनिक डिफरेंट कहारो वेब नेम ता कहा सहित केबे समान नथिबो जाहल भी टिके अलगा थिबो that identifies specific dash on the web रे सेटा को कोन आइडेंटिफाई करे ऑप्शन ए वेबसाइट ऑप्शन बी वेब ब्राउजर ऑप्शन सी पीडीए ऑप्शन डी लिंक ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस पीडीए रे भी फुल फॉर्म कहि दोची पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस तो मु कहिबा कथा सेटा को एग्जैक्टली कोन बोली कहंती a web address is a unique name that identifies a specific dash on the web anyone can give the response the right answer is website website से वेब गुडा को गोटे वेबसाइट हो जोटे बही बलिया जिंस जेंते बही दे तमे अनेक गुडा पृष्ठा देखुछ सेंती वेबसाइट मध्ये अनेक गुडा वेब कंटेंट्स बा वेब पेज को नेकी तयारी कराई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू डैश इज प्रोसेस्ड by the computer into information dash is processed by the computer into information option A processor option B numbers option C input option D data option E none of these dash is processed by the computer into information these are known as data option D is the right answer सेगुडा कहूची डाटा बा रॉ फैक्ट गुडा कंप्यूटर को दबा को पड़े जहा की यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट करी थाए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर डाटा से बाय रॉन्गली ऑप्शन बी लिखिची बट ऑप्शन बी नुह नंबर्स तो नुहे ऑप्शन डी जोटा की प्रोसेस करी थाए कंप्यूटर जहा की यूजफुल इंफॉर्मेशन डाटा को हमें जानि छी जे एनी रॉ फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डाटा and after processing data converts to information option D is the right answer data next question for you unsolicited commercial emails is commonly known as unsolicited email is commonly known as option A junk option B spam option C access option D hypertext and option E none of these unsolicited commercial emails is known as
Anyone can give the response? Simply type it by chat. The right answer is option B. ताकू स्पैम बोली कहती नी स्पैम मेसेज गुडा का आसुची बोली माने तमरो इंटेंशन किछि नथिबो बट ऑन कमर्शियल माने से गुडा तो ठीक ठाक माने संस्था भी न हेई नथांदी बेले बेले से माने तम ईमेल फाइल रे अटैचमेंट करी से गुडा पठांदी तो से गुडा कोउची स्पैम बोली कहते हो हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच प्रोसेस checks the ensure the components of the computer are operating and connected properly? Which process checks the ensure the components to the computer are operating connected properly? इमानको भितरु कोउटा चेक करे जे कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स गुडा लागि छि सेडा ठीक से ऑपरेशन होउची ना नाही सेडा ठीक से कनेक्शन नै छि ना नाही सेडा ठीक से होउची ना नाही तो इमानको भितर को जिनसडा सेटा को एक्चुअली माने रेस्पोंसिबल नहीं थाए. प्रोसेसिंग, बूटिंग, ऑप्शन डी ऑप्शन सी सेविंग, ऑप्शन डी एडिटिंग या ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज बूटिंग. से जो कंप्यूटर रो बूटिंग हबो माने से डिवाइस का सिस्टम पाई कंपैटिबल हबो so that is known as booting. Next question for you. The name a user assigns to a document is called. The name a user assigns to a document is called. जो name टा user assign करे document पाई ताको कौन बोली कुहा जाए? Option A program, option B file name, option C record, option D data, option E none of these. जो नेम टा यूजर असाइन करे डॉक्यूमेंट पाई सेटा को कोन बोली एग्जैक्टली कुहा जाए? एनीवन कैन गिव द राइट आंसर. द राइट आंसर इज फाइल नेम. फाइल नेम ही दबा को पड़े जहा की से यूजर रो कोन से जिनसडा हिची ता द्वारा जणा पड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. वेयर इज द डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर? ऑप्शन ए इन द हार्ड ड्राइव, option B in the modem, option C into the CPU, option D in the disk drive, option E none of these. Where is the disk put in a computer? इमान को भितर कोटा डिस्क पुट करी थाए कंप्यूटर रे बा कोथरे में डिस्क रो व्यवहार करी थाउ. सिंपली थिंक इन द डिस्क ड्राइव. हमर जो डिस्क ड्राइव थाए सेथरे ही डिस्क पका जाए. जल्दी सीडी डीवीडी ड्राइव लागि थाए सेथरा में सीडी डीवीडी पकाऊ. फ्लॉपी ड्राइव लागि थाए फ्लॉपी डिस्क पका जाए तो ताको डिस्क ड्राइव बोली कहंती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. This one, most mail programs automatically complete the following two parts in an email. Most email programs, most programs automatically complete the following two parts in email. Option A, from and date. Option B, from and body. Option C, from and to. Option D, from and subject. Option E, none of these. अधिकांश साइट रे तमे जे कोन साइट रे ईमेल पठाओ से जीमेल ही पारे से हॉटमेल ही पारे से रेडिफ मेल ही पारे बा से याहू मेल भी ही पारे. मो क्वेश्चन हैला से मेल प्रोग्राम रे ए जो दीटा पार्ट को दीटा पार्ट एक्चुअली ऑटोमेटिकली ही थाए. एनीवन कैन गिव द रिस्पांस? ए, बी, सी, डी या F3? The option A is the right answer. From किए पठौची अमुक@gmail.com सेटा ऑटोमेटिकली पढ़ी जीवो. आ को डेट रे भी जाउची सेटा भी आपे आपे पढ़ी जीवो. आउडा सब फिल अप करिवा को पड़े. बॉडी रे तमे कोन लिखियो चाहछो तमे लिखिबो. तू काहा को पठेउ चाहछो तमको भी लिखियो पड़िबो तार ईमेल आईडी टा. सब्जेक्ट ओ विषय लिखियो चाहछो से टॉपिक ता भी पकेउ पड़िबो. तेणु करी ऑप्शन ए टा होचे राइट आंसर. फ्रॉम आउट डेट ए दीटा जाका आपे आपे फिल अप होई थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. The internet allows you
Option A, view web pages. Option B, send electronic mail. Option C, connect to servers all around the world. Option D, all of these. And option E, none of these. The internet allows you. Internet तुमको कौन पाए allow करे? Anyone can give the response? Internet कहीं allow करे? The option D is the right answer. All of these. सबु पाए इंटरनेट रे हमें यूज करी थाउ बा सबु पाए इंटरनेट यूज करी थाए वेब पेज को देखि थाउ ईमेल भी काहा को पठेई थाउ कोनोसी सर्वर सहित भी कनेक्टेड हेई थाउ ये सब काम गुडा के इंटरनेट रे सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट consists of reading through the document you have created then editing a document consists of reading through the document you have created editing माने होची डॉक्यूमेंट को थ्रू आउट तमे पढी नेलो तापरे कोन करिवो ऑप्शन ए प्रिंट इट ऑप्शन बी करेक्टिंग योर एरर्स ऑप्शन सी सेविंग इट ऑप्शन डी डिटेक्टिंग इट ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज editing a document consists of reading through the document you have created and then option A, option B, option C, option D या फिर option E. The option B is the right answer. Correcting your errors. Editing माने होची सेया तो ना गोटे थरो पढ़ी नबा and जदी कोठी किछि भूल भटका थिबो ताको हमें संशोधन भी कर दे परिबा सो प्रिंट मान तो छापी देले किछि करि हेबो नै सेव मान तो स्टोर करी रखी देले रही गला से डिलीटिंग माने तो काटी देले बट एडिटिंग माने हला से जो एरर गुडा को करेक्शन करिबा दैट इज प्रोसेस ऑफ एडिटिंग एडिट माने संपादन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इन एडिशन टू द बेसिक टाइपिंग कीज डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड्स इंक्लूड a dash pad to efficiently move the screen based insertion point. In addition to the basic typing keys, desktop and notebook computer keyboards include a dash keypad to efficiently move the screen based insertion point. एमान सहित बेसिक टाइपिंग की सहित डेस्कटॉप और नोटबुक रे कीबोर्ड रे गोटे कीपैड थाए कोनटा सेटा जहा कि स्क्रीन बेस्ड इंसर्शन पॉइंट रूपे काम करे ऑप्शन ए नेविगेशन ऑप्शन बी एडिटिंग ऑप्शन सी लॉग्ड ऑप्शन डी डॉक्ड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज एनीवन कैन गिव द रिस्पांस हमें कीबोर्ड रे जनरली टाइपिंग करू हमें जनरली कीबोर्ड रे नंबर की गुडा थाए अल्फाबेट की गुडा थाए सब थाए बट एमिति किछि की थाए जहा कि किछि गोटे माने हमरो एक्स्ट्रा काम पाई सब हमके हेल्प करि थाए से की को स्पेशली कोन बोली कहंती ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेविगेशन की कहंती जेमति कि हमरो होम की थाए एंड की थाए पेज अप थाए पेज डाउन थाए इंसर्ट थाए डिलीट थाए सो दैट आर नोन एज द नेविगेशन कीज गोटे कीबोर्ड रे 6 प्रकार की थाए अल्फाबेट कीज न्यूमेरिक कीज फंक्शन कीज देन आफ्टर हमरो स्पेशल कीज और नेविगेशन कीज स्पेशल माने जेमति कि ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ए तीनटा की को कहते स्पेशल की आ ताकू छाडी देले जो की गुडा थाए ताको हमें नेविगेशन की बोली कहिताउ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू फाइल डैश shrinks the size of file so it requires less storage space file dash shrinks the size of file so it requires less storage space option A synchronizing option B scanning option C defragmenting option D compression and option E none of these file dash shrinks the size of file so it requires less storage space जेमती बहुत अल्प जगह रे गोटे फाइल ता रही जाई परिबो ताले कंप्यूटर क्षेत्र रे से जो फाइल को अल्प जगह रे रखिबा को बा गोटे लार्ज फाइल को अल्प जगह रे स्टोर करिबा प्रोसेस को कोन बोली कहंती that process is known as option D compression ताको डिस्क कंप्रेशन बोली कहंती माने गोटे लार्ज फाइल को बहुत अल्प जगह रे रखि दिया जाय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड जस्ट टिके अगर मु कहि सारलानी
तथापि क्वेश्चन रा आंसर टा कहबो कंट्रोल शिफ्ट and alt are called dash keys. Alt, shift, control एगुड़ा को की बोली कहती. Option A function keys, option B adjustment keys, option C modifier keys, option D alphanumeric keys, and option E none of these. Control, shift, alt ए की गुड़ा को कंप्यूटर कीबोर्ड रे को प्रकार की कहती. The right answer is option C. एगुड़ा को मॉडिफायर की बोली कहती बा एगुड़ा को स्पेशल की बोली कहती. ए की रो निजस्व किछि ऑपरेशन न थाए बट ए अन्य कोनोसी शॉर्टकट की जेतला हमें यूज करिथौ सेतबेले ए की गुड़ा को ऊपर डिपेंडेंट होबाकू पड़े. सो दीज आर नोन एज द मॉडिफायर कीज और ताको स्पेशल की बोली भी कहती. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. A personal computer is designed to meet the computing needs. A personal computer is designed to meet the computing needs of option A department, option B individual, option C company, option D city, and last option is none of these. गोटे पर्सनल कंप्यूटर बा पीसी को स्पेशली डिजाइनिंग करा जायछि कोन पाई. Anyone can give the response? Department, individual, company, city, and none of these. Anyone can give the response? Which is the right answer? The right answer is option B, that is personal use. कोटे obviously PC माने ताको पर्सनली काम पाई ही यूज करा जाय थाए बा तार जने पर्सनली यूज करिवो. जेमति कि तमे कहूचो डेस्कटॉप कहूचो बा लैपटॉप कहूचो ताको होम ऑफिस रे सब जगह रे यूज करा जाय. कोन पाई? व्यक्तिगत व्यवहार करिया पाई, निजस्व व्यवहार करिबा पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. an email address typically consists of a user ID followed by the dash sign and the name of the email server that manages the user's electronic post office box. Option A hash, option B @ option C ampersand, option D bitwise greater than, and none of these. Anyone can give the response? An email address typically consists of a user ID followed by dash sign and the name of the email server that manages the user's electronic post office box. Obviously, गोटे ईमेल आईडी रे ईमेल एड्रेस रे जो मेन जिनसडी व्यवहार करा जाए जहा कि ईमेल एड्रेस को दीटा पार्ट रे कर दै थाए. गोटे होची डोमेन नेम आ गोटे होची यूजर नेम. ताले से जो जिनसडा दैट इज @ ऑफ आमे कहू ना अमुक @gmail.com अमुक @hotmail.com. so @ होची गोटे सेपरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. when you turn on the computer the boot routine will perform this test. When you turn the computer the boot routine will perform this test. Option A disk drive test, option B RAM test, option C memory test, option D power on self test, and option E none of these. जेतबेले कंप्यूटर को टर्न ऑन करि थाउ कंप्यूटर को जेतबेले हमें ऑन करि थाउ सेतबेले बूट रूटीन एमान को भीतर को टेस्ट ता करि थाए. एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स? से जोटा टेस्ट करि थाए से बेसिक जिंसटा होची पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. ताले पावर जेतला हमें फास्ट जेतला कंप्यूटर को बूटिंग करू सेतबेले से कोन करे बायोस को जाए. बायोस माने जोटा कहते बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. बायोस सेक्टर जदि इंफॉर्मेशन ठीक से पास करला तापर जाएंगे सेटा कंप्यूटर स्टार्ट होबो. सो दिस इज नोन एज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम. ए कंपाइलर translates a program written in a high level language into option A an algorithm, option B machine language, option D a debugging program, option D Java, and last option is none of these.
A compiler translates a program written in high level language. Compiler translate करे गोटे प्रोग्राम जहाँ के हाई लेवल लैंग्वेज रे लिखा जाय थाए जेमति कि हम जनरल मैथमेटिकल टर्म गुडा का यूज करछे जेमति कि हम इंग्लिश टर्म गुडा का यूज करछे गोटे कहार काम जहाँ के एगुडा सब करि थाए बा कोन से गुडा को कन्वर्ट करि थाए हाई लेवल लैंग्वेज रे लिखा जाय कोड को जहाँ के कंप्यूटर सेटा बुझी पारे. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. मेसिन लैंग्वेज ताले हाई लेवल लैंग्वेज रे लिखा जायतिबा इंस्ट्रक्शन गुडा को मेसिन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करिवा काम होची कंपाइलर रो. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. A directory within a directory is called. गोटे डायरेक्टरी भितर रहिले ताको कोन बोली कहंती. ऑप्शन ए जूनियर डायरेक्टरी, ऑप्शन बी मिनी डायरेक्टरी, ऑप्शन सी पार्ट डायरेक्टरी, ऑप्शन डी सब डायरेक्टरी एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. गोटे डायरेक्टरी आ गोटे डायरेक्टरी भितर रहिले ताको कोन बोली कहंती. गोटे डायरेक्टरी आ गोटे डायरेक्टरी भितर रहिले ताको ऑप्शन डी ता सब डायरेक्टरी बोली कहंती. जोटा मूल डायरेक्टरी थाए ताको मेन डायरेक्टरी कहंती एंड मेन डायरेक्टरी भितरे जोटा आसे ताको तार सब डायरेक्टरी बोली कहंती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू. ताले गोटे प्राइमरी पर्पज सॉफ्टवेयर रो कोन बा गोटे सॉफ्टवेयर रो मूल उद्देश्यटा कोन. The primary purpose of software is to turn data into option A information, option B websites, option D programs, option D objects and option E none of these. गोटे प्राइमरी ऑब्जेक्ट कौन सॉफ्टवेयर रो. गोटे सॉफ्टवेयर रो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होची ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन जनरेट करिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. You can keep your personal files and folders in dash. You can keep your personal files and folders in dash. तम पर्सनल बा व्यक्तिगत फाइल गुडा को तमे कहा भीतर रखि परिबो. ऑप्शन ए माय डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी माय फोल्डर, ऑप्शन सी माय फाइल्स, ऑप्शन डी माय टेक्स्ट, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. तम पर्सनली फाइल गुडा को आ फोल्डर गुडा को तमे कहा भीतर रखि परिबो. Anyone can give the response. पर्सनली होतिबा फाइल गुडा को बा फोल्डर गुडा को ऑप्शन ए माय डॉक्यूमेंट्स भीतर रखि परिबो. निजस्व डॉक्यूमेंट्स भीतर जोडा डॉक्यूमेंट्स नार भी थाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द simultaneous processing of two or more programs by multiple processors. The simultaneous processing of two or more programs by multiple processors. ताको कोन कहंती. एक साइमल्टेनियस माने एकाथरिके प्रोसेसिंग हुए दुई बा तदुर्ध प्रोग्राम ताको कोन बोली कहंती. एग्जैक्टली ताको कोन कहंती. ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. ताको एग्जैक्टली कोन बोली कहंती. एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स. ताकू एक्चुअली मल्टी प्रोसेसिंग बोली कहंती. एक रो अधिक काम गोटे समय रे कैरी आउट हुए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. All the deleted files go to, very simple question. All the deleted files go to option A taskbar, option B recycle bin, option C toolbar, option D mind computer and option E none of these. Very simple thing. Recycle bin. Option B is the right answer. That is the recycle bin. A dash consists of specific rules and words that expresses the logical steps of an algorithm. A dash contains specific rules and words that express the logical steps of an algorithm. Option A syntax, option B programming language, option C programming structure, option D logic chart, option E none of these. एमान को भितरु कोटा स्पेसिफिक रूल बा वर्ड को एक्सप्रेशन दे थाए. ऑप्शन बी सेटा होची प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. हार्डवेयर इंक्लूड्स. एमान को भितरु हार्डवेयर कोटा नहीं थाए.
a set of instructions that a computer runs or executes. Option B, all devices used to input data into a computer. Option C, the computer and all devices connected to it that are used to input and output data. Option D, all devices involved in processing information, including the central processing unit, memory and storage. Option E, none of these. हार्डवेयर एमानक भितर कोटार पाई प्रयोज्य बा हार्डवेयर पाई ए टर्म मानक भितर को टर्म ता होची ठीक. The option C is the right answer. The computer and all devices connected to it that are used to input and output data. Computer inputting करिबा पाई हो, computer outputting करिबा पाई हो, जो डिवाइस गुडा को कनेक्टेड हुए से गुडा को गोटे गोटे हार्डवेयर्स बोली कह जाइते. सिंपली थिंग. A dash is a unique name that you give to a file or information. A dash is a unique name that you give to a file or information. एमानक भितर गोटे फाइल रो बा इंफॉर्मेशन रो दबा पाई यूज करा जाय. यूनिक नेम माने गोटे समान नाम गोटे दबा को पड़े. ताले सेटा कोन कहंदी. ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी डिवाइस लेटर, ऑप्शन सी फाइल नेम, ऑप्शन डी फाइल नेम एक्सटेंशन, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. एग्जैक्टली जो यूनिक नेम दिया जाए बा गोटे समान फॉर्मेट रे नाम दिया जाए, अलग अलग नाम तो दिया जाए बट गोटे समान फॉर्मेट रे नाम दवा को पड़े गोटे फाइल को स्टोर करिया पई ताको कोन बोली कहंदी. एग्जैक्टली ताको फाइल नेम बोली कहंदी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो टाइम इज वेरी शॉर्ट and I think whatever discussed I have today that may be helpful to you in the future preparations of the computer. And next class re mahuri kichi endi interesting jinso nei tam manang pai asin. Thank you all for joining this class.